Human beings started making walls to protect himself. From the very ancient time, walls have been the way to protect us. But where there is no danger, no intruders, what is the need of a wall? Yes, today we are going to study Mending Wall by Robert Frost, one of my favorite poems of school time. मेंडिंग वॉल्स एक पड़ोसी के साथ दूसरे पड़ोसी की वॉल को रिपेयर करने की पूरी जर्नी जो है उसको डिस्क्राइब करती है और जो पोएट के थॉट्स हैं दैट व्हाई द वॉल इज नीडेड. इट्स नॉट ओनली अबाउट द फेंस विच वॉज बिल्ट बिटवीन टू फार्म्स, इट्स अबाउट द इंटरनेशनल बाउंड्रीज. व्हाई दैट फियर इज दैट? ये क्यों होता है कि हमें अपनी बाउंड्रीज इंटैक्ट रखनी पड़ती हैं? Because of the human nature. So why should the human not change his nature about acquiring others things or having that selfish greed? उस greed को अगर change कर दे तो शायद किसी wall की ज़रूरत ना पड़े, except for houses that we have to protect ourselves from other calamities or other animals. So let's see our favorite poem, The Mending Wall by Robert Frost. Mending Wall by Robert Frost is the opening poem of his second collection of poetry entitled North of Boston. इसकी जो स्टोरी है वो रूरल इंग्लैंड की एक स्टोरी है जहाँ पर फार्मर जो हैं फेंसेस बनाते हैं अपने खेतों के आसपास. This poem is set at the site of the stone wall between the farms of two hard-working men of New England, one of whom is the poet himself. There's speculation on how the said wall has come to be broken. There's the talk of rebuilding the wall as well. Something there is that doesn't love a wall, that sends the frozen ground swell under it and spill the upper boulders in the sun and make gaps even two can pass abreast. The work of hunters is another thing. In these lines, the poet speculates that there must be something in the vicinity that breaks down the wall again and again. हो सकता है कि जो पानी नीचे जम जाता है और बर्फ़ बन जाता है उसकी वजह से जो ऊपर बोल्डर्स पड़े हैं वो गिर जाते हैं एंड द गैप इंक्रीज सो मच दैट टू पीपल, दो लोग जो है एक साथ यहाँ से गुजर सकते हैं. द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग. आई हैव कम आफ्टर दैम एंड मेड रिपेयर. वेयर दे लेफ्ट नो वन स्टोन ऑन अ स्टोन बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स. द गैप्स आई मीन नो वन हैज सीन देम मेड और हर्ड देम मेड. पोएट यहाँ पर यही कह रहा है कि ये हंटर्स का काम नहीं है. इस चीज़ से वो डिनाई कर रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने खुद रिपेयर्स बनाए थे जब उन्होंने ये काम किया था और कुछ और है, कुछ अदर थिंग है, कुछ अननोन है जो ये वॉल नहीं चाहती है जिस वजह से ये बार बार टूट जाती है. इस बात से पोएट अपनी पहली बात को ही सेटिस्फाई कर रहा है कि कुछ है जो वॉल नहीं चाहता. बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर. हालांकि अननोन है रीज़न, लेकिन स्प्रिंग मेंडिंग टाइम में हमें वो होल्स वहाँ फिर से नज़र आते हैं. आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगैन. वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो टू ईच द boulders that have fallen to each, and some are loaves and some so nearly balls. We have to use. And the poet says that he informs his neighbor who lives on the other side of the hill and they set a day to meet. दोनों मिलते हैं और वॉल के आसपास चलते चलते एक एक पत्थर को वो रख कर वॉल को मेंड करते हैं या रिपेयर करते हैं. लेकिन he says that we have to use spell to make them balance. This is because कुछ तो पत्थर बिल्कुल गोल हो गए हैं, कुछ दूसरे शेप के, तो उनको एक दूसरे पर टिकाने के लिए आपको एक जादू का तरह ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वो सीधे एक दूसरे पर फिक्स नहीं हो सकते. कहने का मतलब है कि उनको आप एक दूसरे पर चिपकाना या उनको रखना एक डिफ़िकल्ट वर्क है. Stay where you are until our backs are turned. We wear out our fingers
rough with handling them. Oh, just another kind of outdoor game. One on a side, it comes to little more. There where it is, we do not need the wall. He is all pine, and I am apple orchard. My apple trees will never get across and eat the cones under his pines. I tell him, he only says, good fences make good neighbors. The poet says that their hands will become callous as a result of this activity, and he finds it just like a game with one opponent on both sides. And he says that it's just useless because they have different crops. पोएट इसको गेम इसीलिए कह रहा है कि एक तरह का आउटडोर गेम है क्योंकि शायद उसके लिए जो ये वॉल है अननेसेसरी है, क्योंकि उसकी फसल और उनकी फसल में बहुत डिफरेंस है. ना ही उसके जो एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं वो उधर जा सकते हैं, ना ही उसके पाइन ट्रीज इधर आ सकते हैं. सो बट द नेबर इज़ परसिस्टेंट ऑन दिस सेइंग दैट गुड फेंसेस मेक गुड वॉल. कहने का मतलब ये है कि जो नेबर है वो अपनी पुरानी जो सोच है उसको बदलना नहीं चाहता कि फेंसेस अननेसेसरी हैं. स्प्रिंग is the mischief in me, and I wonder if I could put a notion in his head. Why do they make good neighbors, isn't it? Where there are cows, but here there are no cows. Before I build a wall, I'd ask to know what I was walling in or walling out, and to whom I was like to give offense. Something there is that doesn't love a wall, that wants it down. I could say else to him. And the poet says that he is in a mischievous mood. वो कुछ शरारत करना चाहता है और सोचता है कि शायद मैं कुछ आइडिया उसके, कुछ ये जो सोच है उसके दिमाग में डाल सकूं कि कैसे ये फेंसेस जो हैं गुड नेबर्स बनाती हैं. और फेंसेस वहाँ बनाए जाते हैं कि हो सकता है कि काउज़ हों, काउज़ को रोकने के लिए हो, बट यहाँ तो कोई काउज़ भी नहीं है, कोई गाय यहाँ आसपास हमारे नहीं है. तो मैं जानना चाहता हूँ कि हम किसको रोकना चाहते हैं इन वॉल्स को बिल्ड करके, या किसको हम अंदर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. तो वो यही जानना चाहता है कि वॉल की नीड क्या है. द पोएट अगेन स्पेकुलेट्स दैट द वॉल कुड हैव बीन पुल्ड डाउन बाय एल्व्स, बट ही डजंट वांट टू टेल हिज सीरियस नेबर अबाउट दिस. और जब पोएट इस चीज़ को सोच रहा है और उस नेबर को वॉल बनाते देख रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि वो अनसिविलाइज्ड वो पर्सन है जो स्टोन एज में हुआ करते थे और जो स्टोन है वो उसके वेपन है. But it's not elves exactly, I'd rather say. He said it for himself. I see him there, bringing a stone grasped firmly by the top in each hand, like an old stone savage armed. He moved in darkness, as it seems to me, not of woods only, and the shade of trees. He will not go behind his father's saying, and he likes having though thought of it so well. He says again, good fences make good neighbors. यहाँ पर पोएट यही कह रहा है कि वो सैवेज की तरह ही लग रहा है जो उस टाइम पे स्टोन एज में होते थे जिनको नॉलेज नहीं थी. एंड द नेबर वॉक्स इन डार्कनेस. अब डार्कनेस जो है इसका बहुत डीप मीनिंग है. वो सिर्फ शेड नहीं है, ट्रीज़ की शेड या छाया की डार्कनेस नहीं है, बल्कि छाया या जो उसके मन का अंधकार है, जो नई चीज़ को सीखना नहीं चाहता, उसको देखना नहीं चाहता. वो पुरानी ही अपने जो पिता की सेइंग है, उनकी बात है, उसको टोटली से एक्सेप्ट कर चुका है और उससे बाहर निकलना नहीं चाहता. और वो फिर यही कहता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स. आप यहाँ कह सकते हो कि जिसको जो समझना न चाहे आप उसको समझा नहीं सकते हैं. तो एक इसका ये मीनिंग भी निकलता है. Poet thinks that his neighbor has some kind of kinship with the darkness, and the neighbor cannot disagree with his father's thought that good fences account for peace among neighbors.